Hello, Namaste and Sawadika to all of you. I'm Dr. Dimple Arora and I'd like to thank the Indian Association of Thailand Ladies Forum for inviting me here to share a few herbal tips and knowledge regarding managing your health in the Corona era. So let's get started. What would you like to know? Everybody has one top question on their mind, and that is how do we boost our immunity? How can we prevent getting the virus? Because okay, because as we all know, I mean, this is something that if your immunity has the strength and the minerals and the vitamins to fight the virus, you don't really get it. और इस बात की गारंटी मदर नेचर हमें देती है, बिकॉज इस मौसम में जब फ्लू आता है उस मौसम में प्रकृति माँ हमें ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देती हैं एंड बेरीज विच आर वेरी हाई इन वन ingredient, and that's called ascorbic acid, जिससे विटामिन सी बनता है बॉडी में. And that vitamin C is vital to our immune system, to the intelligence of our immune system. Not only that, there was some experiments had been done some time back, and they proved that viruses cannot survive for a very long time if your gut environment is high in vitamin C, A, D, and E. So basically all your basic vitamins are full in nature all around you, and especially in fruits like the Indian gooseberry, जो हमारे अपने आंवला हैं, भर भर के आते हैं in the winter months, so that you can store it and make a very simple pickle like this. Okay, so we get it a lot during the winter months from December to March, and where you can have it raw or in the form of some kind of juices, या उसका वो शोरबा बनाते हैं, पर मैं इसका अचार बनाती हूँ because this is whole, very lightly cooked, and it preserves all of the healing goodness and the ascorbic acid which is in the amla. And this is something. Yes. So Dimple, this achar you've made it at home? That's अपने आप correct. बनाया? Of course. बढ़िया. खुद बनाते भी हैं और अर्बन आयुर्वेदा के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को भी उसको अवेलेबल कराते हैं. In fact, it's even available. If you like, you can get in touch. So this achar Yes. would be for all the year round, right? For all year round. Okay. It's made in olive oil. We don't use any hydrogenated oils, only olive oil, and with a lot of turmeric. Now, turmeric is something that Ayurveda recommends to boost your immune system, because today modern science tells us that turmeric has very high levels of vitamin A and E, both of which are antiseptic and antifungal, and they help the immune system deal with the fungus and bacteria and viruses as well. So this has like a super food for boosting your immune system, not only with ascorbic acid but with the turmeric and the olive oil. And the turmeric, though, all in basically our foods. In सब our चीज़ों में डलता है. yeah. आयुर्वेदा कहता है कि हमें तो हर चीज़ में, whether it's curries or pickles or any kind of even snacks, we put turmeric in that. So the next superfood जो बहुत ही humbly available रहता है all year round is the lemon. Of course all year round, लेकिन कुछ सीजन्स में थोड़ा सा ये कम भी हो जाता है, जिसकी वजह से इसका प्राइस ना गोल्ड से भी ज़्यादा चढ़ जाता है. लेकिन But value इसकी वैल्यू गोल्ड से कहीं अधिक है. Correct. हीरे वाली वैल्यू है इसकी for your immune system, because lemon juice is something that wakes up your liver. It flushes out the toxins. It has the ability to break down even small stones, you know. It's got a lot of citric acid and ascorbic acid, both. And तो इसको सुबह भी ले सकते हैं, and we can take it in the बिल्कुल. afternoon and evening. बिल्कुल. आयुर्वेदा के हिसाब से तो सुबह फ्लशिंग टॉनिक गट के लिए बेस्ट रहता है लेमन वाटर विद अ बिट ऑफ हनी. तो वो आपके हर टॉक्सिन्स को फ्लश कर देते हैं. ठीक है. और कोरोना के दिनों में ख़ास मैंने एक ब्लॉग भी निकाला था और लोगों को हमेशा बताती थी कि जब भी कहीं से होके आते हैं तो थोड़ा सा नींबू पानी, थोड़ा नमक डाल के ज़रूर पिएगा, बिकॉज सॉल्ट एंड लेमन, अगर गलती से वायरस आपके अंदर चला भी गया हो तो विद दिस solution it can get diffused. The active proteins of this virus or any kind of flu virus can be effectively diffused with lemon and salt water. Okay, but people with the high blood pressure, then you just have to manage be a little more mindful of your salt intake. Okay, so then we have another simple thing जो हम बना सकते हैं और लेमन का स्वाद ले सकते हैं, is a whole lemon pickle. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लेमन इतना कीमती है कि इसका छिलका भी
फेंकना नहीं चाहिए. वी कलेक्ट. जैसे आपने नींबू स्क्वीज़ कर लिया ना, उसके छिलके को जार में इकट्ठा कर लो, और फिर जब भर जाए इसमें खूब सारा सॉल्ट, शुगर, थोड़ा सा जो आपको हर्ब्स डालने हैं, फेनल, अजवैन, फेनल यानी सौंफ, अजवैन, हल्दी, लाल मिर्च, कुछ भी आप डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से भर के उसको हिला के धूप में रख दीजिए अबाउट 10 और 14 डेज़ के लिए, एंड यू कीप शेकिंग इट एवरी डे. So इसका it's जूस something like हमारी नानी जी के नुस्खेज. exactly, but it's like an achar. But actually, Ayurveda tells us that pickles and chutneys, okay, have medicinal properties and have a medicinal place in our kitchen, because that is where the real pharmacy is, the kitchen, where you have all these things where you can take on a daily basis and alert the immune system, diffuse viruses and microbes on a daily basis. And that is the lifestyle that I've been leading for the past, I don't know, 20, 30 And years. thank you for sharing this with us this evening. I mean, many people would know, but again, it's, you know, when you hear it, it's again, yeah, why not? Let's do it. You know, नींबू Exactly. है घर में, उसके छिलके. बिल्कुल. Don't और ये throw सब it. चीज़ें तो हमको लगा था कि नुस्खे हैं, लेकिन अब ये सब चीज़ें मॉडर्न लेबोरेटरीज में प्रूव हो चुके हैं कि इसके जो बिटर ऑयल्स निकलते हैं, जो पील में से निकलते हैं, वो इतने सारे बैक्टीरिया और वायरस का विनाश कर सकते हैं. Good. ठीक है, तो ये Okay. जब जाते हैं हमारे अंदर, इट वर्क्स इन द सेम ब्यूटिफुल वे, and it's very delicious. Even kids like to take it, so you don't have to depend on many expensive medications or injections, all right, in the थोड़ा corona. close up ले लें इसका. अब चटनी की बात कर रहे हैं. हाउ कैन आई फॉरगेट द सुपर हाई विटामिन सी टैमरिन चटनी, इमली चटनी, जिसमें खजूर डाल के हमने एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन बनाया है, लेकिन बहुत टेस्टी भी है. सो दिस अगेन इज़ अ वेरी हाई विटामिन सी तो फूड इसको we can use सप्लीमेंट. it as a spread as well. As a and obviously spread. पकौड़े and whatever we बिल्कुल. make, उसके साथ खा सकते हैं. इन माई कबाब्स. क्लिनिक, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फूड सप्लीमेंट है, लेकिन जो जिस तरीके से हमने बनाया, बिकॉज आई यूज़ इट फॉर माई क्लाइंट्स, ओके, हु आर सफरिंग कॉन्स्टिपेशन फॉर एग्जाम्पल. सो आई डोंट यूज़ a lot of any inflammatory agents like लाल मिर्च पाउडर हम नहीं चलाएंगे, ज़्यादा शुगर नहीं चलाएंगे. I'll use dates and I'll use the palm sugar or the So that's cane a sugar substitute for the granular sugar. So we'll make it like without any inflammatory factors, so that it becomes real food medicine. Okay. Okay. Can you tell a bit more about this chutney? So ladies, some of them were just making at home. So basically, not to add. Yeah, it's a very red simple chili, process. The way uh-huh. you guys make it, you soak the imli in hot water and then we sieve it out and then we mix it, we boil it. We can just dilute it a bit with water if you want and add some dates. कुछ खजूर डाल दिया, नमक, चीनी, पर चीनी की जगह we use either गुड़ or use more dates. Because dates में भी इतना मैग्नीशियम मिठास, और yeah, फाइबर रहता yeah. है. बिकॉज व्हेन यू ईट इट अलॉन्ग विद डेट्स के चंक्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया, बिकॉज आई मेड इट एज अ टॉनिक वे यू कैन जस्ट ईट इट. ओके, एंड उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन को मैं क्यों इतना फोकस करती हूँ, बिकॉज जब हमारा कोलन सही रहता है ना, वहाँ पर ही सब मिनरल्स और वाइटामिन अब्जॉर्प्शन होती है. So 90% of our absorption takes place in the colon, and if your colon is clear, whatever food you're eating gets assimilated and absorbed and you get the benefit of the food. So constipation is something that should not be overlooked, whether in the corona era or ever beyond or before that, because that is the root cause of a lot of diseases, starting with low immunity and autoimmune diseases. Okay, so this is imli chutney. Then we have this mixed green chutney, जिसमें मैं 12 किस्म के हरे हरे पत्तों को और जड़ी बूटियों को मिला के एक चटनी बनती है. And the Just main name a few. ingredients is mint leaves and ये तुलसी. तुलसी इज़ लाइक द हीरो. ओके, तुलसी पत्ता जो ये तो कड़ी पत्ता है, इसमें इस चटनी में कड़ी पत्ता भी डलता है और तुलसी पत्ता भी डलता है. ओके, सो all these herbs I'm growing in my garden. If you have time, I'll show you around. Okay, मुझे बहुत अच्छा लगता है to connect with nature. It is my connection, you know, when I grow these herbs and then use them in the kitchen and then make them available to people. So basically, basil, what people don't know in the modern world is that it is an adaptogen, and this is a word modern science has given us. There are few herbs on this planet that help to reduce the body's stress response. Okay, so basically, if you have a high blood pressure, basil will help to regulate that. If you have high sugar levels, basil helps to correct that. Very gently, of course, it doesn't act like a very targeted medicine, but taking it on a daily basis ensures
you do not escalate your metabolic stress in your body. And that is why I believe that because it is so safe and so useful, ancient Vedic ancestors, they always advise us to keep a basil in our front yard and pray to it. And today I realize its importance, especially in the corona era, because as soon as you come home, you can just pluck a few leaves and eat it. That basil will help to neutralize any kind of microbes and viruses that have entered your body. Okay, so basil zindabad. और मैंने basil, पुदीना, करी पत्ता, बाई छापलू, ये पान का पत्ता, इसको यहाँ वाइल्ड पेपर लीफ कहते हैं, इन सबको मिला के थाई में इसको क्या कहते हैं? बाई छापलू। बाई छापलू। ये मियंग खाम बनता है इससे, लेकिन सो हाई इन क्लोरोफिल, तो ये भी इसमें मैं डाल देती हूँ 2-3 पत्ते। एंड of course there's krachai, ginger and a lot of green pepper chilies. ये सब डाल के एक चटनी बन जाती है. And as I said, chutneys are medicines. तो इमली की चटनी और हरी चटनी हमेशा बना के रखिएगा. और एक अचार का ये जो ऐसे है ना, आंवला पिकल, लेमन पिकल, ये सुपर फूड है जो आपको वायरसेस से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं. They have real preventive and curative properties, okay, as validated by science. So that's it. I could go on and on, Renu. I could go, so you might want me back sometime later. But for today, I think let's... Thank you so much, Dimple. Thank you for taking time out and sharing. Like as My I pleasure. said, that, you know, we have chutneys at home, but with what we can substitute, that's the most important thing, right? So thank you very much for sharing. And obviously everybody knows you here, Dr. Dimple, Arora. Thank you very much for once again. Thank you so much. ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ